સુરત में 31 ડિસેમ્બરની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવશે। વહેલી સવારે સામૂહિક હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરાયા છે। પરમ સુખ ગુરુકુળ સ્કૂલ દ્વારા હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવામાં આવ્યા છે। પાઠ કરીને વર્ષના છેલ્લા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરી છે। મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ સામૂહિક હનુમાન ચાલીસાના પાઠમાં જોડાયા હતા। હિન્દુ સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા કરવામાં આવ્યું છે ભવ્ય આયોજન। शहरीजनों ने जान के 31 एट्ले के पश्चिमी संस्कृतिओं अनुकरण, परंतु श्री स्वामीनारायण परमसुख गुरुकुल विद्या संकुलना संस्थापक एवं शास्त्री स्वामी श्री जगत स्वरूप दासजीना प्रेरणा माध्यम थी आ पश्चिमी संस्कृति अनुकरण थतुं अटकवुं जोईए। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति अनुसार हिंदू नव वर्ष कार्तक सुद एकम ने मानवामां आवे छे, परंतु आज समाजनी अंदर 31 खोटी रीते अनुकरण करवामां आवे छे। श्री स्वामीनारायण परमसुख गुरुकुल केम्पसनी अंदर आज रोज विद्यार्थीओ द्वारा आ संस्कृति ने अपनाववामां आवशे नहीं, तेमज आ संस्कृतिनुं अनुकरण करवामां आवशे नहीं ते हेतुथी शाळाना तमाम विद्यार्थी मित्रोए आज रोज 11 हनुमान चालीसाना पाठनुं पठन करवामां आव्युं हतुं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमानजी अने भगवान श्री स्वामीनारायणना याद करी अने सहपरिवार साथे आज रोज 31 भगवान हनुमान चालीसाना पठन द्वारा करीशुं एवो एक सुंदर मेसेज शाळा द्वारा आपवामां आव्यो हतो।